Assalamu alaikum, Mr. Karibullah. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you so much. Dr. Ali will join us in 1 or 2 minutes and then we will start the session. Assalamu alaikum, sir. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ। आवाज आ रही है मेरी राशिद? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। फिर स्टार्ट करें या अभी वेट करें? बस पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, देन हम इंशाल्लाह स्टार्ट करें। डन हो गया, डन हो गया। Yes, Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Rashid, founder and chief executive officer at Ijaz Group of Companies. And I warmly welcome our today's guest speaker, Dr. Muhammad Ali. He is assistant professor at Faculty of Pharmacy, Salim Habib University, Karachi. He is PharmD, MPhil, PhD in pharmaceutics with 15 plus research publications. He's reviewer of five journals, and he is mentor at Research Minds as well. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? And he is also alumni University of Lahore, Rifa International University, and University of Karachi. Thank you so much, Dr. Muhammad Ali, for joining us in today's session of Introduction to Scientific Writing. Thank you so much, sir. Now the stage is yours. Yes, thank you so much, Rashid. It was another. Assalamu alaikum, everyone. Hello and good evening. I am Dr. Muhammad Ali. Okay, we will starting from the basic introduction. Firstly, I'm gonna share my screen. I hope this is visible to everyone. Scientific writing. Yes, sir, it's visible. Okay. Okay, dear colleagues, I hope in this scientific session, this is our second free scientific course, and we have already concluded two of the NOVA internship programs comprising of 4 months each, 2 months for online lectures and 2 months hands-on training on writing. And it
it's been a very good success as far as the collaborations are concerned, research and review articles are concerned. And we've learned a lot, obviously, because being a researcher, what I say that a person should be a lifelong learner. So it's a very good opportunity. Being a researcher, I also learn every day. I used to. I've heard someone saying that if you want to learn something, go for teaching. You teach something, you learn it. You teach something, and you gain more experience out of it. So we're going to be starting it quickly. Rashid, can I have the an idea that how much international students are here and local are here? So am I going to be allowed to switch on multilingual or not? Do let me know, please. So I think around 1,000 students are from internationals, but the thing is that I think now only one or two are attending the class. Okay, So okay, okay. पाकिस्तान का भी यही हाल है, मतलब उसमें भी ऐसे ही है हमारे पास 3,000 4,000 registrations and 12 या 13 लोग लेक्चर ले रहे हैं, ओके 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 क्योंकि ओके हमने ठीक फ्री है, फिर हम फ्री इसको रखा ऐसे है ना करते हैं। साइंटिफिक राइटिंग कोर्स, तो जो चीज फ्री होती है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती ना फिर मैं पाकिस्तान। समझ गया। चले, मैं इस तरह ना कि फिर मल्टीलिंगुअल फिर इसको लेके चलते हैं। ओके ओके, I'll be starting from the introduction. Well, so many of you will be familiar with the scientific writing. Many of the participants will be the student of MPhil, PhD, or the MS, or they might have being the understanding of the scientific writing. Okay, I'm going to starting the very quick thing that scientific writing is actually a formal and structured way of communicating scientific research, findings, and the data analysis. Okay, so it's a primary purpose is actually to share the knowledge, discoveries, insights with the scientific community and beyond. यानी कि अगर हम साइंटिफिक राइटिंग को अगर हम सिंपली अगर हम बताएं कि साइंटिफिक राइटिंग क्या चीज है, तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब जो भी साइंस के शोबे में, अब साइंस क्या है? साइंस है A to Z. It starts from the astronomy, anatomy, and it goes up till Z, zoology. यानी कि A से लेकर Z तक you have got the science, every field of science. Okay, so when I'm talking about the scientific research, it encompasses all the fields: engineering, medical, biotechnology, basic sciences, health sciences, computer sciences, whatever it is. Okay, तो कोई भी रिसर्च जब हम करते हैं, उसका जो रिजल्ट हमारे पास आता है, उसके डाटा को हम एनालाइज करते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर्ड और एक फॉर्मल वे के अंदर एक खास एक तरीकेकार के तहत हम लिखते हैं, उसको हम बेसिकली साइंटिफिक राइटिंग कहते हैं। और पर्पस इसका क्या होता है कि टू शेयर नॉलेज, डिस्कवरीज एंड इनसाइट्स with the scientific community and beyond. I'm going to give an example that during the COVID time, we came to know on social media that there are a lot of research being going on throughout the world. A lot of research have been done in France, China, US, and in other parts of the world. Okay, we hear that this drug is good, this vaccine is good, this is this and this and that, and this is SOP. This, so a lot of discoveries was there, a lot of knowledge was being shared, a lot of knowledge was being published. Okay, so ये एक एग्जांपल मैंने एक्चुअली इसलिए कोट की है कि ताकि आपको समझ आ जाए कि हम एक्चुअली नॉलेज को शेयर क्यों करते हैं और डिस्कवरीज और इनसाइट्स को कैसे हम पब्लिश कराते हैं. दिस इज एक्चुअली द साइंटिफिक राइटिंग. ये तो बात तय होगी. नाउ we're going to jumping on the key characteristics. Okay, the scientific writing has the key characteristics. Number one is it should be clear and concise. Clarity and concision, using the simple straightforward language to convey the complex ideas. Okay, it should be very simple. Scientific writing should be as simple that if, let's suppose I am a PhD in pharmaceutical sciences, and if I came across an article which belongs to management sciences, which belongs to engineering sciences, okay, so when I'm going to read that article, it should be clear to me. Okay,
it should be clear to me, it should be understandable by me that yes, they have done work of this and they have concluded that. Okay, so it should be simple, straightforward. यानी कि वो इतना सिंपल होना चाहिए कि आप जब पढ़ें तो आपको पता चले कि काम हुआ क्या है, सो दैट ये कि उसका फिर फायदा भी तो हो ना। आप उसको इस तरह मुश्किल जबान में, टेक्निकल जबान में इस तरह से लिख देंगे कि वो दूसरे को समझ ही नहीं आएगी, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि वो जो आपकी डिस्कवरी है और वो जो इंसाइट है, वो जो शेयरिंग नॉलेज वाली बात है, वो तो खत्म होगी। तो फिर आप ये कह लेना कि आइडिया ही खत्म हो गया ना, वो जो एक मेन उसका एक जो कॉन्सेप्ट है, हमारा प्राइमरी पर्पस है, वो खत्म हो गया। Okay, the second is the objectivity. Objectivity is actually that what we should do, that we should avoid the personal opinions. Okay, we shouldn't be giving the personal opinions in there. We should be avoiding the biases and the emotional language. Okay, what we should focus on, we should focus on sharing the knowledge, discovery, and insight. It should be in straightforward language, and it should be based on the facts. It should have some objectives. Okay, यानी कि जो भी आपका साइंटिफिक राइटिंग होना चाहिए उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए जो कि साइंस से रिलेटेड हो, जो आम आवाम की, लोगों की खिदमत या उनकी बेहतरी के लिए हो। But it should be for the benefit of the community. Number third is the precision and accuracy. We should ensure that the data, methods, and results are accurately represented. Okay. So when we talk about the data representation, you might have gone through many research articles or the textbooks that you have studied in your schools, colleges, in your universities, at the undergrad level. You see the chapters written in a science book, especially, they contain the text, tables, and figures. Okay, and then there are some references that from where they have taken it. Okay, so they actually show that this is the precise and accurate information, that the data, what we have collected, the methods, what we have used, what we have done, the results, what we have what we have analyzed, they are accurately represented. Okay, so there is no bias in that, there's no personal opinion in that, and no emotional language. It is straightforward sharing of knowledge, discovery, and insight. So jumping on to four, number four is actually the organization structure. Well, if we talk about that scientific writing is formal and structured way of communicating scientific research. Okay, so the organization and structure is as that the following established formats such as IMRAD. IMRAD stands for the introduction, methods, results, and discussion. So overall, our scientific writing, that may be a research article, that may be review article, that may be the thesis, that may be the synopsis, it should contain the following four parameters. That is the introduction, methods, results, and discussion. Well, in case of synopsis means the research proposal. In case of research proposal, there are no results. Okay, so we can skip that. We have the expected outcomes of that. Okay, हम ये कह सकते हैं कि जनाब इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, हमने मेथड्स बता दिए, हम ये बता सकते हैं कि जनाब एक्सपेक्टेड आउटकम, कि हम जो काम करना चाह रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है, फायदा या नुकसान या वट एवर, जो भी हमारा एंड आउटकम रिजल्ट है वो क्या होगा. Okay, so in that we can mention it that this is our expected outcome, that will be expected outcome, whether it will benefit the community, whether it will benefit the patients, whether it will benefit the masses, whatever it is. Okay, so these are the key characteristics when considering the scientific writing. It should be clear, concise, objectivity, the precision and accuracy, organization, and the structure. Okay, I'm going to be quickly going to IMRAD very quickly. इसको हम इंशाल्लाह फर्दर हम आगे जब इंट्रोडक्शन टू रिसर्च पेपर की जब बात करेंगे, when we will talk about the structure of research article, and that we will again go through it in detail. So in introduction, we introduce the research question, provides context, and state the purpose of the study. Okay, हम क्या करते हैं, research question बताते हैं कि what we are going to do, why we are going to do, we give some background of that. Okay, and then we state the purpose of the study, the aims or objectives, obviously. And then in the methods, we actually describe the research design, that either we are going to do a qualitative study or a quantitative study, whatever. Either it is an experimental
or it is a survey based or whatsoever. यानी कि हम ये बताते हैं रिसर्च डिजाइन के अंदर कि हमारी स्टडी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, या हमारी स्टडी जो है वो पेशेंट ओरिएंटेड है, सर्वे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल है, क्या चीज़ है, तो ये चीज़ हम बताते हैं इसमें. प्रोसीजर्स, वी gonna write the procedures along with the references. We're gonna write the procedures that how we're gonna do that, okay? And then the materials used, the chemicals, the glasswares, something like that, okay? Then obviously results, I have already mentioned it that the results are being presented in the data tables and figures. The discussion, now the discussion is actually that we discuss our results, interpret the result, we relate them to the existing knowledge and discusses implications. What actually we do that we discuss our results with the existing knowledge. Existing knowledge means that the previous literature that's been published on the relevant study. Okay. For example, we are doing study on patient-related outcomes. Okay. For example, we are doing a cardiovascular. We are doing study on let's suppose angina and its clinical outcomes. And let's suppose other studies are also there. So we compare those results with our studies existing. We compare the significance of our study with that. यानी कि हम करते हैं बेसिकली क्या है, डिस्कशन के अंदर हमारा मेन जो एम होता है, जो मकसद होता है, वो एक्चुअली ये होता है कि जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको हम प्रीवियसली जो पब्लिश डाटा है, जो प्रीवियसली लिटरेचर है, उसके साथ हम उसे कंपेयर करते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स मतलब उनसे बेहतर हैं, कम हैं, कंपेरेबल हैं, क्या चीज़ है, और उसकी सिग्निफिकेंस को जो है ना हम उसके साथ कंपेयर करते हैं. यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि डिस्कशन जो है एक्चुअली हम गपशप एक लगा रहे हैं, हम प्रीवियसली उससे हम उसकी सिग्निफिकेंस हम बता रहे हैं. So this is the IMRAD structure. Then the type of scientific writings, we got the research articles. The original research articles often published in peer-reviewed journals. Peer review process is actually something that we're gonna talk in our lecture, in which we are talking about the literature review. Okay, in that we will talk about the peer review process. Some of you may have known that peer review process के बारे में आपको पता होगा कि जब हम किसी भी रिसर्च जर्नल में आर्टिकल जमा कराते हैं तो वो रिव्यू में जाता है, और वो जो सारा प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली peer review process. In peer review process, we submit a research article to any journal and they send it to reviewers. Those reviewers review the article, they send the comments, we address the comments, and then it's decided that whether it is accepted, it is rejected, or further revisions are required, whatever. So that's a peer review process. Okay. Then the review articles. In review articles, we actually summarize and analyze the existing research on a particular topic. Previous articles published जो हुए होते हैं उनके ऊपर हम जो उनकी summary और analysis जो है वो हम लिख रहे होते हैं. This is the review article. So for writing a review article, there are some pros and cons that needs to be considered. Okay. So review article is something that is very it's a typical sort of a thing that not everyone can do. It's actually, it requires special training, it requires special training and special skills, obviously. In future, we gonna in next lectures we gonna talk about that. And if you are going to understand, or you want to have a command or review articles, especially the meta-analysis and systematic analysis, we do have a special course for that as well, certified meta-analysis. Yeah, you can avail that as well. Then number 3 is the conference proceedings, the presentations and the papers from the scientific conferences. दुनिया में जहाँ भी conferences होती हैं, उस conference में जो भी चीज़ present होती है, जो भी paper present होता है, that presentations, that presentations and papers are being printed as a conference abstracts, as a conference proceedings. So they are also a type of scientific writing. Then theses and dissertations, which are required for the academic degree, especially the MS and PhDs. Then the technical reports, the detailed reports on research, experiment, and the projects. So these are some kind of scientific writings, some types of scientific writings. Okay, now while doing scientific writing, while you are writing any of the article, any of the thesis or whatsoever, so there are some best practices, key best practices that we should consider.
we should use the clear and concise language. Okay, we should be avoiding the jargons and the technical terms unless necessary. We should define the key terms, explain the technical vocabulary and the acronym. मैंने शुरू में एक बात बताई थी ना कि हम लोगों के लिए लिख रहे होते हैं ये चीज के लोगों को पता चले, लोगों के साथ नॉलेज शेयर और लोगों को इंसाइट मिले। तो उसके लिए क्या होता है कि हम उसे बड़े क्लियर और कंसाइज जबान में उसको हम लिखेंगे। हम कोई उसमें जो है ना वो इमोशनल लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, कोई उसमें मतलब टेक्निकल कोई टर्म्स को इतना मुश्किल करके नहीं बयान करेंगे। मतलब इट शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज। देन वी शुड एक्सप्लेन द टेक्निकल वोकैबुलरी एंड एक्रोनिम। तो कोई भी अगर उसमें कोई टेक्निकल चीज बताई गई है तो उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम जो है वो देंगे। Then we're going to use the active voice, engage the reader and improve clarity. Okay, reader should be engaged in it. It should be written in a very fluent and in very story writing mode that that the reader, he or she, okay, uh, he should complete the article if he or she has started it. So he or she should not get bored. Okay, by reading first 2, 3, 4 lines, he or she get curious that okay, I'm gonna read that article, what they have done in methodology, what they have analyzed the results, and what they have discussed and concluded. So इस तरह से लिखें उसको अच्छे तरीके से कि कोई भी रीडर अगर उसे पढ़े तो वो उसे पूरा पढ़े, इतना अच्छे से मतलब वो क्लियरली लिखा जाना चाहिए। Then we should cite the sources properly, credit the previous research and ideas. Whenever we write an scientific writing, so whatever we write, we have to cite it. Okay, we have to provide a reference that yes, this thing, this claim, what I have written it, this has been done in this previous study. So we have to cite the reference for it. Citation is very necessary, right? I mean, it's like that cite what you write. Okay, so it is very necessary part. So it's the part that part to avoid the plagiarism as well. Okay, plagiarism is a sort of thing that it's me too or copy pasting like that. We have to avoid that as well. Then the use of visual aids, that we should have tables, figures, and graphs to illustrate the data and findings. Well, the tables and figures and graphs, they also, they also increase the elegance of the writing as well. It's look very elegant and very pretty that there's a text written and then there's our colorful graphs and there are very systematic tables and something like that. So it gets very attractive, so the visual aids are very much necessary. Nowadays, the research journals are asking for the graphical abstracts as well. Okay, so they actually enhance the elegance of the research article. It gets attractive. You can see your books, the textbooks that they contain all the things. तो उसमें क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो है ना कि भाई जब टेबल और फिगर्स और वो ग्राफ्स होते हैं ना, तो वो जरा एक बड़ा एक जबरदस्त एक फ्लो सा एक अट्रैक्टिवनेस आ जाती है उसमें। फिर ये होता है कि वो ना बड़ा वो एक कह लें कि लुक एक अच्छी आती है, एलिगेंस एक आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है इसमें। I got a question in the chat section that so can you explain the jargon and the technical terms? Technical terms, that terms related to a specific field. Okay. If I'm gonna tell you that, okay, in pharmaceutical sciences, there is a term dysphagia. Okay, dysphagia. Dysphagia is actually means that a patient who is, I mean, dysphagia is actually the swallowing problem. The patient is not compliant to taking a tablet orally, having a problem in oral swallowing. Okay, so dysphagia में हम ये कहते हैं कि कोई भी मरीज जो है ना उसे टेबलेट लेते हुए जो है ना मसला होता है। ठीक है, so this is dysphagia. So dysphagia is a pharmaceutical term. Okay, so I have to explain in simple words. I have to explain in 1 or 2 words that the problem of dysphagia and what dysphagia is, so that a person who is, for example, कि वो management sciences का है, तो वो अगर dysphagia पढ़े तो वो आगे हमने एक लाइन में बताया हो कि dysphagia क्या है तो वो उसे पता चल जाए। So this is actually the explanation of the technical term. Jargons का वर्ड ये होता है कि मतलब कोई मतलब ना वो अनप्रोफेशनल लैंग्वेज ना हो, यानी कि इट्स नॉट लाइक कि भाई आपको नारेबाजी या कोई ये वो इस तरह, मतलब इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल।
should be not your biases, मतलब आपका कोई biasness उसमें ना हो, आपकी जो है ना उसमें वो चीज नहीं होनी चाहिए, कोई ना मतलब पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, ये चीजें मतलब इसमें जो है वो आ जाती है। Okay, then the last point here is the edit and proofread, that we should ensure the accuracy, clarity, and coherence. Coherence means that it's in a very fluent way that the reader, they you know, they don't get bored with that. So in a very clear manner and a very accurate manner, you have written it. Okay. So the best practice is, I'm going to revise it, that we should have the clear and concise language. The key terms should be defined, active voice, references should be cited, the visual aids, and then the editing and proofreading, that is very much necessary, because it curtails the that there are some grammatical and spelling mistakes while you write. You may have some of those problems, so by proofreading and editing we can get rid of those spelling and grammatical mistakes as well. Yes, it's right. Someone has defined jargons in the chat section, and it's relatable. Yes, exactly. It's like that. Okay. Well, now jumping on to the importance. Importance is actually why we write a scientific writing. We have already discussed it, that we share the knowledge. Okay. The advancing research, establishing the credibility. Okay. You demonstrate the expertise and contribution to the field, informing the policy and practices, providing the evidence-based information for decision making. तो ये जो चार चीजें हैं, मतलब हम जो है वो नॉलेज को हम शेयर करते हैं। अब नॉलेज को हम शेयर कहाँ करते हैं? हम साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर उसको शेयर करते हैं, अपनी पर्टिकुलर फील्ड में उसको हम शेयर करते हैं। हम जाहिर बात है रिसर्च में अपने आप को एडवांस कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च को अपने आप में एडवांस करने से मुराद ये है कि कि भाई लाइक जैसे हम एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, फिर फर्दर हम अपने पब्लिकेशंस बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर बात है हम रिसर्च में एडवांस हो रहे हैं, प्रमोशंस हमारी हो रही हैं। in some of the countries that the number of publications, your promotion depends upon the number of publications. Then there are some research portfolios as well. So the H index, the impact factors, the citation, search index score, so all those things are in the advancing research and so on. So many other things are in it as well. So these are this is the importance of the scientific writing. Then I'm going to be quickly jumping on to the some common types of scientific writing. I have briefly explained here. Yeah, these are. So I'm going to be going through again a very quick something, that when we talk about the research articles, the original research findings, okay, we do some original research, हम कोई नया काम करते हैं, उसको हम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम प्रॉपरली आर्टिकल की फॉर्म में लिखते हैं, टिपिकली हम उसे पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश कराते हैं, और इमरैट को फॉलो किया जाता है उसमें। we follow the IMRAT structure: introduction, method, results, and discussion, presents the new data, methods, or insights, research article. Then comes the review article. We actually summarize and analyze the existing research on a specific topic. We provide an overview of the current state of knowledge. यानी कि इसमें हम करते क्या है कि जो जितना डाटा इस वक्त तक मौजूद है ना करंटली, लेट्स सपोज कोई भी आप टॉपिक उठा लें, कोई भी डिजीज उठा लें, कोई भी आप कम्युनिटी का इशू उठा लें, कोई भी पब्लिक हेल्थ का इशू उठा लें, आप उसमें ये देखें कि अभी तक मई 2025 तक कितनी स्टडी होगी, उसके ऊपर आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख लेते हैं, समरी लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द
Yes, everyone, I'm back. Actually, we are living in Pakistan, and Pakistan is a very beautiful country, having a diverse uh, demographics. We got deserts here, we got mountains, we got everything here. It's a very beautiful country. It's a very beautiful country to live here, but there are some problems, and one of the problem is load shedding nowadays, especially in Karachi, and we've been facing that. So मेरी लाइट जो है वो चली गई थी, मैं बहरहाल दोबारा से ऑनलाइन हो गया हूँ. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. Okay. Well, talking about the conference proceedings. So, conference proceedings में क्या होता है कि आपकी जो कॉन्फ्रेंस होती है, खैर जैसे अभी हमारे सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में अभी 29-30 मई को जो है ना वो कॉन्फ्रेंस हो रही है. तो अब उसमें यह है कि हमने पोस्टर एग्जीबिशन रखा हुआ है, पोस्टर कंपटीशन भी रखा हुआ है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द पोस्टर कंपटीशन, देन देयर आर सम प्राइजेस ऑब्वियसली, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ओके. तो उसमें फिर ये होता है कि बच्चे बड़ा जोर लगाते हैं जनाब के लिए हमने पोजीशन लेनी है. ठीक है. तो फिर वो जो कॉन्फ्रेंस में जो पोस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ओरल पेपर जो प्रेजेंट होते हैं, तो फिर उनकी ना एक बुकलेट एक तैयार होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट बुक या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग उसे हम कहते हैं. तो वो एक्चुअली सारी बात है, फिर जब आप कहीं पे भी आप अपना सीवी जमा कराते हैं या इन फ्यूचर जब भी आप अपने कहीं दाखिला लेते हैं, कुछ भी है सारा कुछ, तो अगर कोई आपसे पूछता है अच्छा जी पब्लिकेशन है आपकी, तो आप कहते हैं कि नहीं जी पीयर रिव्यू जर्नल तो नहीं है लेकिन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है. तो आप वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग वाला उनको शो करा सकते हैं कि देखिए ये चीज़ है. सो इट हैज़ इंपॉर्टेंस एज वेल. ओके. उसके बाद आती है जनाब थीसिस और डिसर्टेशन. थीसिस ऑब्वियसली एक लॉन्गर और मोर डिटेल जो है ना वो रिसर्च होती है. ठीक है. और स्टूडेंट एबिलिटी चेक की जाती है ओरिजिनल रिसर्च के लिए. थीसिस में अमूमन वी डू थीसिस फॉर ऑब्वियसली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एकेडमिक डिग्रीज, मास्टर्स, एमफिल्स एंड पीएचडी. Okay, so it's a comprehensive literature review and methodology done by a student, and it has a time period of obviously, अगर हम एमफिल की बात करें, मास्टर की बात करें, तो 2 साल से 4 साल तक की ड्यूरेशन होती है. इफ यू टॉक अबाउट द पीएचडी, इट्स मिनिमम ऑफ 3 years, मैक्सिमम ऑफ 8 years. तो मतलब लोग इसमें जो है ना वो वेरी मतलब करती है. पूरी दुनिया में जो इसकी टाइमलाइन है दैट इज वेरिड. पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, देन हमारे यहाँ जो पीएचडी की जो मिनिमम ड्यूरेशन है दैट इज 3 years, मैक्सिमम ऑफ 7 to 8 years, इस तरह से करते हैं. तो नॉर्मली लोग 4-5 साल, 5 साल, 6 साल, 4-5-6 पीएचडी कर लेते होते हैं. तो मतलब ये कि ये इस तरह ट्रेंड होता है. और एमफिल भी 2 से 4 साल की ड्यूरेशन होती है. सो थीसिस आर रिटन इन those academic degrees, especially the master's, MPhil or PhD. Okay, the technical reports. जहाँ तक था लोग टेक्निकल रिपोर्ट्स के ना, तो टेक्निकल रिपोर्ट्स भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट्स पे होती है. और इसमें एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं, ठीक है, लाइक जो कुछ साइंटिफिक अथॉरिटीज होती हैं, साइंटिफिक जो मतलब डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं साइंटिफिक, ये सारा. तो टेक्निकल रिपोर्ट्स अमूमन वो जो है ना वो इस पे वो दे रहे होते हैं. सो ये स्टूडेंट्स से कोई इतना ज्यादा इनका जो है ना वो मतलब जारी बात है, स्टूडेंट्स इससे नहीं होता. बीइंग ए स्टूडेंट अगर आपका वास्ता पड़ेगा ना, तो आपका जो वास्ता पढ़ना है वो जनाब आपका रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, ऑब्वियसली थीसिस और डिसर्टेशन है, ये चीजें हैं. अच्छा हाँ, केस स्टडीज आर एक्चुअली द इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक केस और सिचुएशन. खासतौर पर जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, मतलब मेडिसिन, बिजनेस और सोशल साइंसेज, तो पर्टिकुलर किसी एक केस के ऊपर जो है ना आप अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल जो है वो आप उसकी इलस्ट्रेशन करते हैं, उसको आप उस पर राइट अप करते हैं. Then literature reviews are actually related to review articles, so they are the same. So literature review you have to do in thesis as well. So literature review इसी के अंदर आ जाता है. Then comes the abstract. Abstract is actually a summary. It's a very short summary. It's typically of 150 to 250 words. It may be of 300 words. अच्छा, हर रिसर्च जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. कुछ जो हम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जी इस इतने वर्ड से ज्यादा आपने नहीं जाना. कुछ कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, आप 500 से 1000 वर्ड्स पे भी जा सकते हैं. ओके. देन द एब्स्ट्रैक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. दे आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड. नॉन स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? नॉन स्ट्रक्चर्ड ये होता है कि आप एक ही पैराग्राफ में फर्स्ट 2 लाइंस में बैकग्राउंड लिख रहे हैं, फिर उसके बाद अपने एक लाइन में आप उसका एम लिख रहे हैं, फिर आप मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड देन कंक्लूजन. तो एक पैराग्राफ में आप वो चीज लिख रहे हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट, तो स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट में ना हम ये चीज फॉलो करते हैं, एमरैड. स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम बैकग्राउंड लिखते हैं एक लाइन में, देन हम एम लिखते हैं, देन हम उसके बाद
क्या कहते हैं मेथोडोलॉजी लिखते हैं, फिर रिजल्ट एंड देन कंक्लूजन, हेडिंग्स देकर हम उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको हम लिख रहे होते हैं। सो दोनों आप लिख सकते हैं, डिपेंड करता है उस रिसर्च जर्नल की पॉलिसी क्या है। So it depends on the research journal's policy. The abstracts provide an overview of the research questions, methods, and the main findings, often used to entice readers to read the full article. Okay. Then comes the research notes, similar sort of, that the assignment reports or something like that. Okay. Feedbacks, collaborations, typically shorter form of the thing. Then the book reviews. Then you write critically evaluation of the scientific books or publications, provides an overview of books, content, and themes. So this is very professional and very, हम कहते हैं ना कि डिफरेंट जो है वो स्टेजेस होती हैं किसी भी चीज़ की ना, तो ये बहुत ही एक एडवांस जो है ना वो स्टेज है, उस पे जाकर जो है ना आप इस मतलब काबिल होते हैं। इट्स अ वेरी if I talk about research out of 10, so it's 10 out of 10. Okay. So you have to have the experience, you have to have the grip, you have to have the academic and scientific rigor to do that. Means that book review are done by the professors having the experience of 25 to 30 years in research and so, and they have hundreds and hundreds of postgrad students or something like that. तो इसके लिए बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस आपको जो है ना चाहिए होता है, वेरी एक्सपीरियंस required. So each type of scientific writing serves a specific purpose and audience, and understanding these differences is essential for the effective communication and the scientific community. So this is all about regarding the introduction of the scientific writing. What you have learned here is that many of you obviously knowing about the scientific writings. Most of you are the students of MPhil PhDs. Most of you are being aware of this. So it was our just that concept of this lecture was that we should introduce very shortly the key characteristics, the IMRAD structure, the types of scientific writings, the best practices what we have to use, then the importance of it, and different types of the scientific writings. So if you have any questions, do ask, please. Thank you so much. This is Mercy from Nigeria. Thank you for the comment. Well, I do believe make class interesting. Teaching is actually, if it is not interesting, then it's very difficult to understand. Okay. Then there's a question that how can we have the access of this PDF? Management will answer you this question. Management आपको बताएगी कि कैसे है। अच्छा, क्लास के जो एंड टाइम है ना, उसमें यह है कि देखें, ऐसा होता है कि बेसिकली क्लास का कोई एंड टाइम हमारा नहीं है। इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन। ऑब्वियसली मैंने अपना लेक्चर दे दिया, अब आपका कोई भी सवाल है आप उसमें मेरा सवाल मतलब आप करें। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल होता है तो वो आप मैनेजमेंट को भेजें, वो हमें भेजेंगे, हम उस हिसाब से उसको आपको क्यूरी हम जवाब जरूर देंगे इसमें। ओके ओके मिस sir, I want suggestion literature. Okay. May I know that from which field you are? Miss Waria, I think. And secretary writer research paper on mental. अगर आप दोनों मुझे अपना फील्ड बता देंगे ना, मुझे अपना फील्ड अगर आप बता दें तो मैं आपका जो है ना वो कर दूंगा। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा देखें, आपने जो सवाल किया है ना कि लिटरेचर आर्टिकल्स कहाँ से मिलते हैं, तो देखिए डेटाबेसेस बहुत सारे मौजूद हैं। आपका जो नेक्स्ट क्लास है ना वो एक्चुअली इसी के ऊपर है कि लिटरेचर रिव्यू कैसे रिट्रीव किया जाता है, यानी कि आर्टिकल्स कैसे ढूंढे जाते हैं, किस तरह से डेटा बेसिस हैं, जैसे गूगल स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर से आर्टिकल कैसे निकाले जाते हैं। और उसके अलावा डेटा बेसिस और बहुत सारे हैं, जैसे कि वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है, और उसके अलावा जो है ना जैसे हमारी लाइब्रेरीज में हमारे ढेर सारे रिसर्च आर्टिकल्स पड़े होते हैं, तो वो चीज़ है, तो उसके अंदर आपको जो है वो सारा डिटेल जो है ना वो बता दी जाएगी। अच्छा, ये जो अगला सवाल है कि रिसर्च पेपर अनलेस
till we conduct our own experiment. वेल अगर हम बात करें ना रिसर्च पेपर की, तो देखिए अगर तो आप अपना काम खुद कर रहे हैं, नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इफ यू आर कंडक्टिंग अ न्यू एक्सपेरिमेंट, ओके, so that will be an original research article. But if you are conducting a literature review, you can write a review article. You just collect the previous research articles and summarize them and write a review article. तो आप वो भी कर सकते हैं. अच्छा, types of scientific writing, we do have specific types of scientific writing. ये जो scientific writing होती है ना, उसकी मुख्तलिफ अकसाम होती है. लाइक रिसर्च आर्टिकल भी scientific writing है, थीसिस भी scientific writing है, एक साइंस की बुक जो है वो भी एक साइंटिफिक एक कम्युनिकेशन और राइटिंग है. ठीक हो गया. और अगर हम बात करें जैसे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग की, जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो अमूमन आप देखते हैं साइंटिफिक पोस्टर्स बना के स्टूडेंट्स जो है पोस्टर एग्जीबिशन, पोस्टर कॉम्पिटिशन और ये वर्कशॉप्स और ये जो चीज़ें हो रही थी, तो इनकी भी पब्लिकेशन होती हैं, यानी कि इनकी बुक्स पब्लिश होती हैं, तो वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं. तो इस तरह से हम इनको समराइज हम करते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से आपने बात की ना, तो इसमें वही बात आती है कि ये जो क्वेश्चन था ना आपका एक्सपेरिमेंट, तो आप बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से अगर कोई भी अपना कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई भी बायोटेक ड्रग के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कुछ भी अपना नया को कर रहे हैं, वो ओरिजिनल रिसर्च कहलाएगी. रिव्यू लिख रहे हैं वो रिव्यू आर्टिकल कहलाएगा. कोई स्पेसिफिक कोई केस कोई उठा रहे हैं, आप स्पेसिफिक कोई चीज उठा रहे हैं, तो केस बेस्ड हो जाएगा, इस हिसाब से होगा. नहीं, क्लिनिकल ट्रायल्स और केस स्टडीज में डिफरेंस होता है. क्लिनिकल ट्रायल्स जो होती है ना, वो आप, केस स्टडी जो होती है ना, वो एक केस होता है, इट्स वन केस. ओके. आप जितने भी अगर आप सर्च आउट करें ना डिफरेंट, अगर आप गूगल स्कॉलर पे आप जाएं, आप लिखें केस स्टडी, तो मैक्सिमम आप केस लेंगे तो वो एक केस के ऊपर अमूमन जो है ना वो हो रहा होता है. क्लिनिकल ट्रायल्स तो फिर आप उसमें ग्रुप्स बनाते हैं ना, यू डू हैव सम काइंड ऑफ ग्रुप्स, यू डिवाइड योर पेशेंट्स, you divide your the population into two groups, group A or group B, group 1 or group 2, something like that. And then you do a clinical trials, that can be a random clinical trials, that can be a non-random clinical trials, it can be a single blind or double blind or whatsoever. Okay. तो इन दोनों में टेक्निकली जो है ना वो डिफरेंस है. तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो पहले अप्रूवल चाहिए होती हैं, सारा कुछ है, वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है. और जो केस स्टडी होती है उसमें भी अप्रूवल तो आपको चाहिए होती है, बट उसमें यह कि वो इतना हेक्टिक प्रोसेस नहीं है. लेकिन केस स्टडी को लिखना जो है, दैट इज समथिंग वेरी, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई मस्ट से. I mean, it's something that should be written in a very structured and very organized manner. कि वो बड़ा एक उसके लिए क्लैरिटी और एक आपको एक खास, यू हैव टू हैव सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड राइटिंग स्टाइल, तो आप केस स्टडी का वो लिख सकते हैं. ओके, डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? यस, राशिद, डू यू हियर मी? आई थिंक राशिद इज नॉट हियर. Yes, yes, I am here. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो then we should end the session, I think. Thank you so much, sir, for the wonderful session. And if there's any question by the participants, you can ask. If there's no question, then we will end the session. And लिटरेचर रिव्यू के ऊपर फिर कल क्लास होगी बाय डॉक्टर सारा. यस, उस क्लास में ना आपको ये सारी चीजें, आपकी एम्बिग्यूटी जो है ना वो क्लियर हो जाएगी. कि भाई हम आर्टिकल्स कहाँ से लें, लिटरेचर में हम कहाँ से करें, तो वो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें और ज्यादा. यस, 20 to 25 पेपर्स आप 10 पे भी लिख सकते हैं. आप 10 पे भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है. लेकिन ये होता है कि वो डिपेंड करता है ना कि आप देखिए, रिव्यू आर्टिकल के ना मुख्तलिफ टाइप्स हैं. एक नैरेटिव रिव्यू होता है, एक जो है वो आपका होता है सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है, एक मेटा एनालिसिस होता है. तो वो ना उसका मुख्तलिफ होता है. तो आप अगर 20 से 25 पेपर पढ़ के 20 से 25 पेपर अगर आप लिख रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है. ठीक है. एक होता है ना टॉपिक ऐसा है कि उस पर जनाब आपको मतलब 500-600 आर्टिकल्स मिल गए. ठीक है. तो देन आप क्या करेंगे, उन 500-600 को लेंगे, उनमें से छांटी करेंगे, 100 निकलेंगे, फिर फर्दर छांटी करेंगे, 40 रह जाएंगे, फिर फर्दर छांटी करके 30 रह जाएंगे, तो जहाँ 30 पे आप लिखेंगे. वो एक तरीका होता है, मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक एनालिसिस का प्रोसीजर होता है. लेकिन एक टॉपिक है उस पर काम ही बहुत कम हुआ है, और मैक्सिमम आपको जो आर्टिकल्स मिल रहे हैं वो जनाब 15 से 20 या 25 मिल रहे हैं. ठीक है. तो फिर उसको जब आप लिख रहे होते हैं, तो उसमें फिर आप उसको बताते हैं कि जी ये काम देखिए बहुत कम हुआ हुआ है. इस तरह से ये चीज़ जो है ना होती है.
वो डिपेंड करता है यानी कि आपके ना टॉपिक के ऊपर। सो यू कैन राइट अ रिव्यू पेपर बाय रीडिंग 20 to 25 पेपर्स, लेकिन उसमें फिर वही बताया ना कि वो इट डिपेंड्स, प्रोज एंड कॉन्स है उसके, तो वो हमें देखने पड़ते हैं। क्वालिटी 40, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज क्वालिटी 40, ये है क्या? Yes, yes, you can leave. No problem, no problem. ओके राशिद, मेरा ख्याल से बस करते हैं, कंप्लीट हो गया आई थिंक। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, हाँ आप लिख सकते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल आप इसके ऊपर जो है ना मतलब रिव्यू आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं, इस पे रिव्यू ही होगा, जारी बात है। हाँ अगर आप ये कर रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कराई गई है पाकिस्तान में, ठीक है। अब डिपेंड करता है ना, देखे ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। इसमें आप किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं? आप फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, आप फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, आप लेदर इंडस्ट्री की बात करें, कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक आपको स्पेसिफिक करना होगा। अच्छा, इंजीनियरिंग के वाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर उसमें है कि क्या रूल्स रेगुलेशंस उसमें देखे जाते हैं, क्या मतलब उसमें स्पेसिफिकेशंस देखी जाती हैं, क्या मतलब सारी चीजें, तो इसके ऊपर बड़ा अच्छा मतलब आप ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं, इस पे आप रिव्यू भी लिख सकते हैं, कोई नया काम ढूंढ के उसमें नई रिसर्च करके आप रिसर्च आर्टिकल भी लिख सकते हैं, यू कैन हैव इट। और हमारे पास अगर इंजीनियरिंग के जो मेंटोर्स हैं से आपको हम लाइन अप करवा सकते हैं इस हवाले से, और आप उनसे फर्दर डिटेल में अपने आइडियाज शेयर करें, डू पब्लिकेशन, बिल्कुल करें। जी राशिद, इजाजत है फिर। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। और ऑब्वियसली ये आर्टिकल लिख सकते हैं। जी जी। हमारे पास मेंटोर्स हैं तमाम फील्ड्स के, तो यू कैन एनरोल इन अवर नोवा रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम and its applications are live now. Or then obviously during the mentorship sessions you will write the article and then submit your article for the publication. So thank you so much everyone. We are closing the session now. उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल, देन वी विल मीट टुमारो ऑनलाइन इंशाल्लाह इन आवर न्यू क्लास ऑफ लिटरेचर रिव्यू। थैंक यू।